जो 8-9 दिनों के सेशन में हमने व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम, वेरिएबल्स पे हमने बात करी, व्हाट इज द हाइपोथेसिस। आई थिंक हमने बहुत माइन्यूटली हर एक चैप्टर को बहुत डीप तरीके से और जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर अजय चौधरी सर ने, जिनकी रिसर्च की क्लास के लिए हम लोग काफी ऐसे आतुर होते थे कि शायद वो उतना इजीली, आप सब यू आर सो लकी, सारे स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि आप सबको इतने अच्छे से सर ने अपना पूरा जो नॉलेज है वो दिया। और आज जो हमारी क्लास है देविका मैम लेने वाली हैं, और शी इज आल्सो गेस्ट फैकल्टी इन आवर डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज शी इज रिसर्च स्कॉलर, वो पीएचडी कर रही हैं अभी। वेलकम टू देविका चुंडावत मैम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आई ओवर टू यू। अगला जो चैप्टर है वो मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, और आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से इसको बच्चों को बता पाएंगे और बच्चों को उसकी नॉलेज काफी अच्छी होगी। थैंक यू। Thank you थैंक so यू सो much, मच। ma'am. So I would request, I would like to seek the permission from Venus ma'am and sir for starting the class. Yes, welcome, Devika. Welcome. Thank you, sir. Okay, so we will be starting with the sampling and data collection. So I'll just share a PPT with you people. Yeah, is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So basically, what do you understand by sampling design and research methodology? Since आप लोग काफी time से इस workshop में हैं, so you must have had an idea of what basically research is. So anybody among you who would want to like throw a light on what exactly research is? Okay. So I will directly start. So this is our agenda. Basically what you can see on the screen, which is introduction to sampling design. So what basically is sampling design? The types of sampling methods, probability of sampling methods, non-probability sampling methods. You can see all this. Determinants of sampling size. आपकी sampling size का क्या रहता, क्या होना, कैसे लेना चाहिए. Variability and study design. Resource constraints in sampling. Statistical power and sample size. Data collection. आप कैसे करेंगे data collection methods in psychology. Observation as a data collection method. Then you have interviews and questionnaires, and then conclusions. Okay, so what basically is sampling design? Why would you take somebody's sample, और क्यों आपको research में sampling की जरूरत पड़ती है? So when we talk about sampling design, so sampling design refers to the strategy or framework used to select a subgroup from a larger population for the purpose of research. It lays the groundwork for how data will be collected and influences the reliability of study outcomes. So sampling design वो चीज है जो आप एक पर्टिकुलर बड़ा सा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन. Now you can't go and take collect data from everybody present in India, right? तो आप उसको कैटेगराइज करते हैं, आप उसको छोटा करते हैं कि मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे किस सैंपल की नीड होगी. हर एक टॉपिक के बेसिस पे हमें रिसर्च करने का रहता है कि आप रिसर्च किस टॉपिक पे कर रहे हैं, तो आपको किन लोगों के डेटा की नीड होगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट उदयपुर. If I talk about Udaipur and if I talk about this flyover, अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, if you might know कि एक पारस से लेकर I think this सोजतिया ज्वेलर्स तक, I suppose वहां तक बन रहा है flyover, full flyover. The construction has started. So if I want to collect the data कि उसके कंस्ट्रक्शन से कितने लोगों को दिक्कत आ रही है, let's talk about ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन कितना हो रहा है. इफ आई वांट टू टेक दैट डेटा,
तो आई नो विच एरियाज टू पुल. जैसे कोट चौराया हो गया, आई हैव टेकन बिकॉज उधर बहुत ट्रैफिक होता है ऑलरेडी, एंड वहां से पुलिया हो दिस flyover will be constructed. Then Paras, again the Paras circle itself has traffic, and then now the construction has started, तो वहां पे अब traffic बढ़ेगा. So I know where to take the data from. अब मैं पूरे उदयपुर का लेके तो कोई सेंस नहीं बनता. लेट्स से कि अगर मैं फतेहपुरा में ले लूं उसका डेटा, तो फतेहपुरा में तो उसका कहीं कुछ लेना देना ही नहीं है उससे. So the people might not be disturbed by the traffic that will arise during this area, that will be coming in these areas. There would be like they won't be facing noise pollutions or any related things, right? So sample हम इस अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं कि हमें जो रिसर्च करनी है और हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें किस पे फोकस करके रिसर्च करनी है, उस हिसाब से आप सैंपल आपका सिलेक्ट करते हैं. ओके. Now, significance in research methodology. A well-crafted sampling design is critical for ensuring valid and generalizable findings in research. The choice of sampling method can significantly impact the study's relevance, credibility, and replicability. Now, as I told you, जो मैंने अभी आपको example दिया है कि let's talk ये उदयपुर का. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ आई गो एंड टेक सैम्पलिंग फ्रॉम फतेहपुरा पीपल, तो दे उनका मैं किस श्योरिटी से बोलूं कि वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं. लाइक उसका रेलेवेंस कितना कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट द वंस हु आर कमिंग अंडर दैट एरिया जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो दे माइट नॉट बी facing that much problem. Of course, if they are passing from that area तो अलग चीज है, but right now my research point is कि जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास वाले रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, right? Let's say खेती, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मिंग की बात करें, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सडन टेम्परेचर में चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान हो तो बीच में बारिश की बहुत दिक्कत हो गई थी. लाइक विंटर्स में भी बारिश हो रहे थे, एंड कुछ आप टाइम गैस नहीं कर पा रहे थे और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से क्रॉप्स काफी खराब हुई थी, फार्मिंग में काफी दिक्कत आई थी. तो इफ आई वांट टू कलेक्ट द डेटा, तो आई कांट गो एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डॉक्टर फॉर दैट. मैं किसी डॉक्टर के पास जाके वो डेटा कलेक्ट नहीं करूंगी कि अच्छा आपको कितनी दिक्कत आ रही है इस बारिश की वजह से. इट वुड बी द फार्मर्स हु आर फेसिंग द मोस्ट प्रॉब्लम. मेरे को रिसर्च करना है फार्मर्स पे कि उनकी खेती बाड़ी में कितनी दिक्कत आ रही है, तो मैं पर्टिकुलरली उस एरिया के फार्मर्स पे फोकस करूंगी. देन माई रिसर्च कैन यू कैन से कि उस पर कोई क्रेडिबिलिटी है, उसका कोई रेलेवेंस है. अदरवाइज इफ यू रिसर्च टॉपिक कुछ और है और आप डेटा कुछ और कलेक्ट कर रहे हो, तो इट्स नॉट credible. Now, next is overview of presentation structure. So this presentation will systematically explore key aspects of sampling design, starting from foundational definitions, moving through various methods, to discussing the implications of sample size and data collection techniques. So this is what you will further see in the slides, कि आपके कैसे सैम्पलिंग होगी और कैसे डेटा कलेक्शन होगी. Now, types of sampling methods, understanding variability and approaches. Sampling methods, there are numerous sampling methods, primarily categorized into two broad types. Probability sampling, where each member of the population has a known chance of selection, and non-probability sampling, where some members have a higher chance or of being selected based on specific characteristics. Now, isme and the other one would be choosing the right method. The selection of an appropriate sampling method is crucial for obtaining a representative sample. Factors such as research objectives, population characteristics, and resource availability should heavily influence this decision. Now, when you talk about sampling method, कि आप कैसे लेंगे, primarily जो इसके दो types है, probability and non-probability. Probability मतलब आप सबके पास equal chance है, आपको पता है कि आपको चांस मिलेगा, देयर इज अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है इसमें. इसका
A magician. Let's talk about a magician. Jab or magician, leave it on magician, but we can also talk about class when you select when there is elections going on school. Okay, आपको class में monitor choose करना है. Now, if उसमें आप example ले सकते हैं कि for example the teacher said that I don't want to select a particular student out of it. I would give just give me 2 seconds. Yeah, so sorry. So there are numerous like probability sampling where each member has a member of the population has a known chance of selection. Now, if I tell in the classroom कि I am going to conduct a voting for a monitor and मैं चाहती हूँ कि सबको equal chance मिले, तो मैंने सबका नाम ले लिया उसमें. I've prepared a bowl जिसमें मैंने सबके नाम चिट्स पे लिख के and I put that inside. जिसका नाम आएगा would be chosen as a monitor. I was not biased here. I just wanted कि हर बच्चे को equal chance मिले. तो that comes under probability sampling कि हर को पता है कि उसका एक chance है select होने का. Right? Non-probability sampling would be where some members have a higher chance of being selected based on specific characteristics. Like for example, उसी के अंदर ले लेते हैं हम monitor में. If I conduct a voting wherein I ask the students to write a name and give it to me, कि आप लोग मुझे बच्चे मुझे लिख के देंगे नाम and I will not write the names कि आप मुझे नाम लिख के दे दो कि आपको क्या लगता है किसको मॉनिटर करना चाहिए. और उसमें मुझे we know कि when we talk about a class writing a name तो वो अपना favorite student को ही choose करते हैं. Okay, so there would be higher chance of being selected based on specific characteristics की popularity उसकी class में ज़्यादा हो. पॉपुलैरिटी ज्यादा हो, उसके फ्रेंड्स ज्यादा हो क्लासरूम में, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, एवरीबडी इज हैप्पी विद द पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो वी नो कि उसमें 2-3 कैटेगरीज ऐसी होगी कि वो 2-3 बच्चों की सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ये तो बन ही सकता है मॉनिटर. So that comes under non-probability sampling, where the member has a higher chance of being selected because of their specific characteristics. Yeah. Now, what is probability sampling methods? Now, ensuring randomness and representativeness. Understanding probability sampling. Now, probability sampling involves techniques where every individual has a known non-zero chance of being included in the sample. This methodology ensures the sample is representative of the population, thereby enhancing the validity of research results. And what would be the types of probability sampling? That would be common types of probability sampling, which includes simple random sampling. Each member has an equal chance. अभी जो मैंने आपको example दिया. Systematic sampling, where selecting members at regular intervals. Now, there next would be stratified sampling, dividing the population into subgroups, and cluster sampling, randomly selecting entire groups or clusters. Now, I'll give you example for each one of them. When we talk about random sampling, each member has an equal chance. When you go to a magician, you know कि magicians usually select करते हैं अपने audience में से किसी एक को and to show a particular act or something, तो वो randomly select करते हैं because you know कि जो उनकी audience है वो audience को नहीं जानता है magician, तो वो randomly किसी को भी choose कर सकता है उसमें से. So that would be random sampling. With the term itself you can understand कि random sampling मतलब किसी को भी randomly choose करा है, तो सबके पास equal chance है choose होने का. Next would be systematic sampling. Now selecting members at regular intervals. That would be selecting a particular member. मैंने बोला कि अभी जैसे कि क्लास मॉनिटर की बात हो गई, तो I would say कि एक आकाश is the topper for example. So आकाश को मैंने चांस दिया, ठीक है.
उसके बाद आई फील कि देयर इज अनदर स्टूडेंट हु इज नॉट गुड विद एकेडमिक्स में बी बट इज गुड विद स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन है, तो उसको मैं चांस दे सकती हूँ, तो आई वुड चूज मोनिका। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नाउ सिलेक्टिंग मेंबर्स एट अ रेगुलर इंटरवल, तो मैंने चेंज करते रही मैं, कभी मैंने आकाश को लिया, कभी मैंने मोनिका को लिया, सो देयर आर रेगुलर इंटरवल्स एंड आई एम सिलेक्टिंग मेंबर्स, आई एम चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। Okay, next is stratified sampling. Now dividing the population into subgroup. I would say उसके लिए कि मेरे को अगर कोई डेटा कलेक्शन करना है, लेट्स से इन स्कूल, और स्कूल में मुझे चाहिए सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो मैंने उस स्कूल में एक ग्रुप बना दिया है, पॉपुलेशन के अंदर एक सब ग्रुप बनाया है कि मुझे सिर्फ बोर्ड, जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे, 10th हो गया, 12th हो गया, इन्हीं बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कि डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल दैट वुड बी, वी कैन से दैट्स अ ग्रुप कि 10th के बोर्ड्स के बच्चे, सब ग्रुप वुड बी इधर जेंडर वाइज हैव डिवाइडेड देम, कि एक ग्रुप है 10th बोर्ड्स का बच्चा, उसके सब ग्रुप्स हैं मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, and then it would be cluster sampling, wherein randomly selecting entire groups or clusters। तो randomly मैंने बोल दिया कि this particular group I want to perform in this sector or this section, so that would be randomly selecting entire groups। I said मुझे collection, data collection करना है for let's say again I'll give you an example of a school because I think सबके लिए वो सबसे ज़्यादा relevant होगा, because everybody has gone through school, तो सबका same ही रहता है schedule। So let's say कि I am taking data of students for the interval, कि आपका interval की जो timings होते हैं, are you okay with it or not? तो उसके लिए I don't need to know which class I have to take sample from। मैं उसके लिए पर्टिकुलर मैं नहीं चाहती कि मैं एक सेक्शन बना दूं कि नहीं मुझे 5th क्लास के इंटरवल का रिसेस पीरियड का ही जानना है। या जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो जस्ट टू नो कि रिसेस टाइमिंग उनके लिए काफी है या नहीं। लेट्स से कि मेरा स्कूल में रिसेस टाइमिंग मैंने 20 मिनट्स दे रखा है ना, इज 20 मिनट्स इनफ फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव फूड? तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने रैंडमली इनको बोल दिया कि स्कूल में एनी क्लास ही, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेड 1 to 12, तो ऑफ कोर्स 12 के लिए 20 मिनट्स कुड बी वेरी लाइक अच्छा खासा टाइम है टू ईट, कि उन्हें फटाफट खा ले, बिकॉज दे आर ओल्डर किड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेड 1, तो वो छोटे बच्चे, उनको खाने में टाइम लगता है, तो उनके लिए शायद 20 मिनट कम हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Please speak in Hindi. ओके ओके फाइन। तो मैंने यहाँ पे या दीपिका, आई सपोज यू हैव सम क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन है दीपिका? अच्छा, हिंदी मोर, ओके। या तो क्लस्टर सैम्पलिंग में मैंने बोला कि ग्रेड 1 के बच्चे हैं तो उनको रिसेस में टाइम लगता है, लंच में टाइम, खाना खाने में टाइम लगता है, पर सबके लिए ग्रेड 1 से लेकर 12th तक सबके लिए लंच टाइम एक जितना ही है, विच इज 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए मैंने एक ग्रुप बनाने से अच्छा मैंने सोचा किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में मैं चली गई, फॉर लेट्स से कि मैं 5th क्लास में चली गई, और मैंने उनको पूछा कि मैं आपके लिए क्या ये 20 मिनट काफी होते टू हैव फूड, या फिर लेट्स से कि बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में एंड देयर वाज नो पर्टिकुलरली क्लास इन्वॉल्व्ड, मतलब पूरी स्कूल बाहर ग्राउंड में थी। एक ग्रुप ऑफ बच्चा देखा मैंने कि एक ग्रुप खड़ा है, मैं उसके पास चली गई जस्ट टू कलेक्ट माई डेटा कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो आपको लंच का टाइम दिया जाता है 20 मिनट, क्या वो आपके लिए काफी है? तो मैंने किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस किया, उसकी एज पे नहीं, उसकी उनकी दूसरी चीजों पे नहीं। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल मैंने जो चूजिंग की उसमें। ओके, सो दैट वुड बी योर क्लस्टर सैम्पलिंग।
अब non-probability sampling methods, not defining non-probability sampling. Non-probability sampling encompasses methods where not individuals have a chance of being selected. While these methods can be practical, they introduce bias and can limit the generalizability of findings. Types of non-probability sampling. This category includes types such as convenience sampling, selection based on ease of access, purposive sampling, selecting individuals with specific characteristics, snowball sampling where existing subjects help recruit new ones, and quota sampling, ensuring certain characteristics are met in the sample. अब जब हम बात करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग encompasses methods where not all individuals have a chance of being selected. मतलब एक ऐसी सैम्पलिंग मेथड जहां पे आपको पता है कि जो सारे लोग हैं उनके पास सबके पास चांस नहीं है सिलेक्ट होने का. While these methods can be practical, they introduce bias and can limit the generalizability of findings. ये कह सकते हैं कि ये मेथड प्रैक्टिकल कह सकते हो आप कि आप किसी को चूज नहीं कर रहे हैं पर आप चूज भी कर रहे हैं. बेसिकली ये इस टाइप का होता है. ये बायसनेस कह सकते हो आप कि जैसे कि मैंने आपको जो रोड वाला एग्जांपल दिया था पारस से सुजित्या ज्वेलर्स तक का, मैंने अगर सिर्फ पारस के लोगों का लिया डेटा और बाकियों का नहीं लिया तो वो एक बायसनेस आ जाएगी उसमें कि आपको शायद सिर्फ वो एरिया दिखा जहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, वहां नहीं दिखा जहां पे अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से दिक्कतें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं. तो वो बायसनेस आ जाएगा, तो वो जनरलाइजेबिलिटी डेटा में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है. ओके, नाउ जब हम बात करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स की, तो सबसे पहला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिलेक्शन बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस. मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल कलेक्ट किया कि मुझे लगता है कि मैं पारस में रहती हूँ तो मुझे बाकी एरिया का नहीं कलेक्ट करना चाहिए, मैं पारस का ही कलेक्ट कर लेती हूँ. तो यहाँ मैं बायस हो गई हूँ. मैंने अपना इजी एक्सेस देखा कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे लिए यहाँ के लोगों का डेटा कलेक्ट करना इजी होगा, तो मैंने उन लोगों को चूज कर लिया. सो दैट वुड बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग. मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने सैंपल कलेक्ट किया. नेक्स्ट इज पर्पोसिव सैम्पलिंग. नाउ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे मैंने किया कि मुझे बस वही लोग चाहिए जिन लोगों ने लेट्स से कि पीएचडी कर ली है. ओके, तो मेरा जो डेटा कलेक्शन है वो मैंने पर्पसली कैटेगराइज कर दिया है. मैं सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल को मेरे डेटा कलेक्शन में चूज करूंगी जिनका पीएचडी है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर है, बाकी को मैं पूछूंगी नहीं. तो जैसे लेट्स से कि